Today I go for how to implement the text, how to implement a text field. It's just like your like you can pass a single line value, or you can pass the multi-line value in a Python text. If you want to enter some value in program, then I will use this Kinter text. Okay, so এটা ମୁଁ ଡାକିଥିଲି text definition ଟା. Yes, sir, Dokai. So I show the program directly here. See there. It is a text. Okay, here you can write anything here. Hi, welcome to Python programming. Okay, so it is a text field that we are passing here. So if you check here, import Kinter, import from Kinter, import star. This is a package which is used to working with Kinter. Then next is we're defining a function. Function name is onClick function, and now we're using pass method. So by passing here, नहीं ये सब ପାଇଁ ଆମର କଲର ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ. ଓକେ, ଆମକୁ ସ୍ପେସିଫିକ जो एलिमेंट गुड़ाक अच्छी ମୁଁ କେବଳ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରିଡିଫାଇନ୍ ପାଇଁ କଲର ଚେଞ୍ଜ କଲି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରିନି, ମାନେ ଡାଇନାମିକାଲି ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ ମୁଁ କରିନି. ମୁଁ କେବଳ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଡିଫାଇନ୍ କରିଛି ତା ପାଇଁ ମୁଁ କରିଛି. ତ ଏଇଟା ହେଲା ଟେକ୍ସଟ. टेक्स्ट फील्ड ପାଇଁ ଏଟା ପାସ୍ କରାହେଲା ଟେକ୍ସଟ ଇନସର୍ଟ ହେଲୋ. ଏଠି ମୁଁ ହେଲୋ ଟାକୁ ଇନସର୍ଟ କଲି. ଇନସର୍ଟ ହେଲୋ ଟାକୁ ଇନସର୍ଟ କଲି. ତାପରେ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ରେ ମୁଁ ଇନସର୍ଟ କଲି ବାय ଆଣ୍ଡ ବାय ଇନସର୍ଟ କଲି. तापर देखो ये गोटे यूज करा हला टेक्स्ट टैग ऐड हियर 1.0 to 1.4. so and text dot tag add start 1.8 to 1.3. तो देखो
here जोटा दिया है here is a what, it is a tag, or we can say it is a label that we are passing, and the start is another label. जोटी देखो here जो label टा में pass करा है से label टा में hello टा हमरा ହେଲା blue color, here टा position होची 1.0 ରୁ 1.4. तापर start position रे हमर जो value टा अछि तार foreground color टा हैला, background color टा हैला yellow, आर बैकग्राउंड कलर टा हैला ब्लैक. ओके, ये जो हियर जोटा अछि हियर माने फर्स्ट पोजीशन रो स्टार्ट हेछि 1.0 रो, सेटा येलो कलर आसीला. आ एठी देखो हमर 1.8 जोटा अछि. ओके, 1.8 माने एठू स्टार्ट हेछि, तमे जे काउंट करिवो 8 ରୁ 13 जोटा अछि एटा एई पार्ट रे. आर बैकग्राउंड टा हे गला ब्लैक, फोरग्राउंड टा हैला ग्रीन. आ स्टार्टिंग पोजीशन रे जोटा रहिला बैकग्राउंड कलर टा येलो रहिला, foreground color टा blue रहिला. Okay, starting position it is counted as 1.0 to 1.4, माने 0 1 2 3 4. Okay, 5 6 7 8 8 position नु again हमर स्टार्ट हे गला कोन बैकग्राउंड टा ब्लैक हे गला. ओके, ता भितरे फोरग्राउंड टा हमर ग्रीन कलर रहे. मेरा होची टेक्स्ट रा हमर इंफॉर्मेशन बुझि पाइला प्रोग्राम टा फॉर द टेक्स्ट. अमित, हर्षा, प्रियदर्शिनी, सोमेश. Yes, sir. Yes, sir. Okay. The next example, top label. Top label widget work as a window that are directly managed by the window manager. They have not necessarily have the parent widget. Okay, so right, what is top label? This widget work as window top level widget work as window that are directly managed by the window manager. माने गोटे विंडो ऊपर आ गोटे विंडो एटा ओपन हेकी रहइबो. So how it is working actually, I show you.
top label enter. Okay. Okay, so it is open. Check here. The two window it has opened. Again, I close it. I run this application. Now check. Okay, so top level means in window, another window it has displayed. So from Kinter import star root ticket top label top dot main loop. Okay, so in window, another label window it will display. Spin box. The this represent the parent window. There is a list of most commonly used option for visit. This option can be used as a key and value pair. Okay, so like the other component. Okay, so like the other component, it is having also what option and master. Just a minute. Okay, Spinbox widget is a variant of standard Kinter entry which can be used to select from a fixed number of values. So you have a drop down list. From the drop down list, you have to select only one value. So that is the work of Spinbox. Okay, or it is spinning a number, spinning a what a volume. Like when you click on the lower part, it is display like increment the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, and when you click on the upper part, it is also decrement. So it is increment or decrement the number. It is called as the word spin box that we can say here. Okay, so right, what is spin box? This widget is a variant of the standard Kinter. It is a variant of standard Kinter entry widget. This widget is a variant of standard Kinter entry widget, which can be used to select okay, because the Spinbox widget is a variant of a standard Kinter entry widget which can be used to select from a fixed number of values. So how it is actually working, the Spinbox that I will display here.
स्पिन बॉक्स एग्जांपल टा जोटा कि आम 0 रू नहीं 10 पर्यंत शो करियो। Either it is increment, this is decrement. So it is increment or decrement up to the value 0 to 10. এটা বুঝিলা এটা হচ্ছে আমার ইনক্রিমেন্ট ভ্যালু করিবা তলটা ডিক্রিমেন্ট হবো উপরটা ইনক্রিমেন্ট করিবা এটাকে আমরা স্পিন বক্স বলি করবো বুঝিলা বুঝপাইল Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। ओके the next example next is penned window. Penned window is a container widget that may contain any number of panes arranged horizontally or vertically. Each pane contains one widget and each pair of pane is separated by a movable sash. Okay, penned window is a container widget that may contain any number of panes. Okay, panes means panel. Penned window means it is divide one window to the multiple window. Okay, means it is divide a window into a particular para. You can say that is called as a penned window. Okay, so right, it is a container widget that may contain any number of panes.
external. Okay, so each pane, right? Next, each pane contains one visit and each pair of pane is separated by movable slash. Okay, so I'll show you the two program here. See there, it is converted. This window is converted in this format. Pen. It is one pen. It is one pen. It is one pen. Okay, like we're using E is equals to int e1 dot get int e2 dot get. Okay, then left data string a plus b. Okay, left data string a plus b. Okay, so right. Okay, it is just like a simple calculator. बुझला? That he a e1 dot get b e2 dot get माने एठी जा वैल्यू आमे दबा या कि a आउ b वेरिएबल स्टोर हबो आउ एटी शो करिवो कोठी लेफ्ट डाटा रे कौन हबो ना दीटा नंबर टा को से ऐड करिकि ताको स्ट्रिंग रे कन्वर्ट करिकि शो करिवो लेफ्ट डॉट इंसर्ट वन लेफ्ट डाटा w1 डॉट पेंड विंडो w1 डॉट पैक एटी हमें पैक मेथड यूज करले fill both expand one left entry w1 border हैला 5 दिया हैला ना w1 border हैला 5 5 माने पेंड विंडो पे 5 दिया हैला w1 डॉट ऐड लेफ्ट रे ऐड हैला w2 पेंड विंडो ओरिएंट इक्वल्स टू वर्टिकल w1 डॉट ऐड w2 ओके w1 रे w2 अगेन ऐड करले वर्टिकली नेक्स्ट होची कोन ए दिटा में एंट्री कले u1 डॉट एंट्री w2
e2 dot entry w2 বুঝি পাচ্ছ না বুঝিবনি Yes, sir. Yes, sir. एंट्री माने कौन एंट्री माने हमें ऐड करूचे जेमति कि हमें एठी ऐड कले w1 विंडो 1 रे हमें लेफ्ट रे ऐड कले ओके तापर एठी हमें एटा हला w1 टोटल टा w1 रे हमें w2 पैनल टा ऐड करूचे तो e1 डॉट एंट्री e1 आकु को गला सेटा कोडी ऐड करा हला w2 रे ऐड करा हला e2 डॉट एंट्री w2 तो w2 डॉट ऐड w2 रे मु ऐड कली का को e1 को ऐड कली e2 को ऐड कली तापर ये जो बटन जो हमें यूज कले बटन इक्वल्स टू बटन ओके बटन इक्वल्स टू बटन w2 टेक्स्ट हला ऐड कमांड हला ऐड तो w2 डॉट ऐड बटन माने w2 विंडो रे मु बटन टा को ऐड कली ऐड टा होची कोन ऐड टा होची तार फंक्शन टा एटी हमें फंक्शन टा कॉल कले ए फंक्शन उसी कोन करूची ना वैल्यू गुडा को रिट्राइव करूची e1 और e2 होची कोन आर नेम टा e1 और e2 ओके e1 रो मु वैल्यू टा को रिट्राइव कली e1 डॉट गेट e2 डॉट गेट सेटा कोडी स्टोर हला a एंड b ओके तापरे सी कोन कला ना ऐड कला a प्लस b को ऐड करके स्ट्रिंग रे कन्वर्ट कला सेटा कोडी स्टोर अछि लेफ्ट डाटा रे स्टोर अछि एटा कोठी इंसर्ट हबो लेफ्ट डॉट इंसर्ट वन लेफ्ट डाटा माने लेफ्ट जो साइड रे एटा जो हम ऐड करजे एटी हमरो शो करिवो बुझ पाइलो केमती Yes, इवेंट sir. काम करছে केमती गोटे सिंपल कैलकुलेटर हम यूज करले तापर होची label frame is a simple container widget. It is a primary purpose is act as a spacer. Space द पे हम एटी label frame यूज करिवा ओके देखो label frame टा कौन ना label frame is a simple container widget. The container widget which act as a spacer or container for complex window layouts.
এটা from import kinter root টিকে এটা ডিফাইন করা হলা এটা label frame this is label frame frame ର ନାଁ ଏଠି ଦିଆ ହେଲା pack ହେଲା both side expand ହେଲା yes तो ये जो label frame text ଭିତରେ ରହିଲା inside a label this one is a label frame ଏଟା ଗୋଟେ label ଦିଆ ହେଲା label ଭିତରେ frame ର ନାଁ ଦିଆ ହେଲା inside the label frame okay so last one that we already covered text message okay so we cover up to the GUI application so GUI chapter is over so tomorrow I will start another chapter or the last chapter that is database connectivity how you have to insert the information and store in the database permanently okay so database connectivity part I will go for in the next class okay chalo